Hello guys, today in this video we are going to talk about the poem Indian Weavers composed by Sarojini Naidu. Guys, so first of all introduction to the poetess. Sarojini Naidu is a major poetess of Indian Indo-Anglican poetry. She was born at Hyderabad of Bengali Brahmin parents. Her father was professor at Nizam's College there. Her mother was a very highly educated and cultured lady. It was to great and wonderful parents that Sorojini and her six sisters and brothers were born. Harindra Chattopadhyay, the youngest of them, later turned poet and playwright. Father Agorinath was the first DSC of India, having obtained the degree of Edinburgh University in 1877. Sarojini Naidu was a born poet. She began to compose poems at a very early age. She published three volumes of verse: The Golden Threshold, The Bird of Time, and The Broken Wing. Then she devoted much of her time to the struggle for independence and social upliftment. A collection of her poems, The Sceptred Flute, was published in 1946, and Feather of the Dawn was published posthumously. She met Mahatma Gandhi in 1914, and it gave a new direction to her life. Then she joined Annie Besant's Home Rule movement and later on the Congress. She became president of the Indian National Congress in 1925, hence, she was called a poet patriot. Her public life was full of struggles. After independence, she was made the governor of United Province, now Uttar Pradesh. She died in harness on March 2, 1949, mourned by millions of Indians. Mahatma Gandhi called her Bharat Kokila. She wrote 184 poems in all. On the basis of their themes, her lyrics may be divided into five categories: nature lyrics, love lyrics, lyrics of life and death, folk songs, and miscellaneous poems. She was more than a poet, she was a nationalist, a fighter for women's rights, a reformer, and a nation builder. Now, guys, introduction to the poem. Indian Weavers was published under section folk songs in the Golden Threshold. It has three quatrains. In each stanza, a question is asked in the first two lines and it is answered in the next two lines. It is an Indian scene. The weavers, particularly in the rural side, weave cloth on handlooms in different colored patterns. A questioner puts them questions and the weavers answer. It is at three different hours that the questions are put: one at break of day, when nature wakes up and new life emerges; the other at the fall of night, which the newly married couples eagerly await; and the last at chill moonlight
time, the word chill is associated with cold stillness, apprehending death. In the three stanzas, Sarojini Naidu has a symbolic representation of man's journey from birth to death. The weavers are the fates in Greek mythology, the three sisters Clotho, Laches, and Atropos, weaving the threads of the birth, life, and death of man. In Indian mythology, the symbol is of Brahma, Vishnu, and Mahesh. Brahma is the god of creation, Vishnu, the god of prosperity, and Mahesh, the god of death. Now, guys, full explanation of the poem. So, now stanza number 1. Weavers weaving at break of day, why do you weave a garment so gay, blue as the wing of a halcyon wild? We weave the robes of a newborn child. Guys, in these lines, the poetess Sarojini Naidu observes some weavers who are weaving a bright and beautiful cloth at break of day. Asks them, she asks them why they are weaving such a gay cloth. The weavers reply that they are weaving it for the dress of a newly born child. Therefore, the cloth they are weaving is of blue color, like the wing of a kingfisher. The dawn is the symbol of the beginning of life, the birth of a child. The halcyon bird is the symbol of the spirit at the beginning of creation. The gaiety of the robes reflects the gaiety of the nature's heart at a new birth. Guys, the rhyme scheme of this stanza is AA, BB, and there is inversion in halcyon wild, that is, the noun has been used for the adjective, and the gay ropes is a transferred epithet. And now in Hindi, the explanation in Hindi. कवियत्री सरोजिनी नायडू को जुलाहों को ध्यान से देखती है जो प्रातः सुबह सवेरे के समय चमकीला और सुंदर कपड़ा बुन रहे हैं। वे उनसे प्रश्न करती हैं कि वे इतना आकर्षक कपड़ा क्यों बना रहे हैं या क्यों बुन रहे हैं। जुलाहे उत्तर देते हैं कि वे ये कपड़ा नवजात शिशु के परिधान के लिए बुन रहे हैं। अतः जो कपड़ा वे बुन रहे हैं उसका रंग किंगफिशर अर्थात राज मत्स्य पक्षी के पंखों के समान नीला है। सुबह या सवेरा जीवन के प्रारंभ का, एक बच्चे के जन्म का प्रतीक है। हेल्कॉन पक्षी भी सृष्टि के आरंभ की भावना का प्रतीक है। उन वस्त्रों की चमक भी नव जन्म पर प्रकृति के हृदय की भावना का प्रतिनिधित्व करती है। और जो राइम स्कीम है इस स्टेंजा की वो है AABB। और जो हेल्कन विल्ड में इन्वर्जन का यूज़ हुआ है अर्थात संज्ञा को विशेषण से पहले प्रयुक्त किया गया है। नाउ गाइस स्टेंजा नंबर 2। स्टेंजा नंबर 2। Weavers weaving at fall of night, why do you
weave a garment so bright, like the plumps of a peacock, purple and green. We weave the marriage veils of a queen. Guys, uh, at the fall of the night, the poetess finds the weavers weaving a cloth bright and multicolored. She asked them for whom they are weaving a cloth of variegated colors. The weavers replied that they are weaving a cloth of purple and green color, magnificent and colorful like the feathers of a peacock. This cloth is meant for the bridal robe of a queen. The peacock, with its green and purple feathers, and the fall of night agree with the queen's marriage veils. All these suggest the color and magnificence of life. Really, this stanza refers to Lord Vishnu, the god of prosperity, marriage, wealth, and splendor. It corresponds with the splendor of the bright and variegated colors of the peacock plums. Guys, the rhyme scheme of this stanza is CCDD. This stanza represents human life, which is full of cheerfulness and gaiety. The first two lines contain a question, and the last two lines give an answer. This pattern is a novelty. Now, guys, full explanation in Hindi. रात्रि के प्रथम प्रहर में कवियत्री जुलाहों को चमकीला तथा भिन्न भिन्न रंगों का कपड़ा बुनते हुए पाती है। वह उनसे पूछती है कि इस विभिन्नता भरे रंग के कपड़ों को किसके लिए बुना जा रहा है। जुलाहे उत्तर देते हैं कि वे बैंगनी तथा हरे रंग का कपड़ा बुन रहे हैं, जो इतना शानदार और रंगीला है जैसे कि मोर के पंख होते हैं। यह कपड़ा रानी या साम्राज्ञी के वैवाहिक वेश के लिए है या वैवाहिक परिधान के लिए है। अपने बैंगनी और हरे पंखों वाला मोर तथा रात्रि का आगमन रानी के वैवाहिक घूंघट के अनुरूप है। ये सभी वस्तुएं जीवन के विभिन्न रंगों तथा शान का आभास कराती हैं। वास्तव में यह पद्यांश विष्णु देवता का संदर्भ देता है, जो कि संपन्नता, विवाह, धन और सौंदर्य, शौर्य के और या शान के देवता हैं। यह मोर के चमकीले तथा भिन्न भिन्न रंगों के पंखों की शान से मिले जुले लगता है। और जो राइम स्कीम है इस स्टैंजा की CCDD है। प्रथम दो पंक्तियों में एक प्रश्न पूछा जा गया है और अगली दो पंक्तियों में उनका उत्तर दिया गया है। और जो कवित्री ने ये पैटर्न यूज किया है बिल्कुल नवीन है। यह पद्यांश ऐसे मानव जीवन का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें प्रसन्नता और उल्लास भरी हुई हो। एंड नाउ गाइस, स्टैंजा नंबर 3, स्टैंजा थर्ड। Weavers weaving solemn and still, what do you weave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. Guys, the weavers are now weaving cloth in a very serious and quiet atmosphere. It is a chill moonlight time. They are now weaving cloth as white as a feather or a cloud. It appears that
white feather has been torn off a dead bird. The chill moonlight reminds us of the famous line, "The night is still, the cloud is grey" in Coleridge Christabel. The, the weavers who are weaving in solemnity could produce only a funeral shroud, which is usually a white color. This stanza is associated with Mahesh or Shiv, the god of destruction, death. Thus, the poem ends with the tragedy of human life. Guys, the poem has a complex structure. Each line, um, this stanza, like other stanzas of the poem, has a unique pattern of prosodic rhyme, rhythm as given below, or we can say the rhyme scheme is EEFF, and this stanza represents the end of life. There is inversion in moonlight jewel. The similes like white as a feather, white as the cloud are very appropriately used. And the stanza explanation in Hindi now. अब जुलाहे अत्यंत शांत व गंभीर वातावरण में कपड़ा बुन रहे हैं। यह चंद्रमा की रोशनी में ठिठुरन भरा समय है। वे अब ऐसा कपड़ा बुन रहे हैं जो कि पंख अथवा बादल की भांति सफ़ेद है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह सफ़ेद पंख किसी मृत पक्षी से तोड़ा गया है। चंद्रमा की रोशनी में ठिठुरन भरी रात्रि में कोलरिज की प्रसिद्ध कविता क्रिस्टाबेल की पंक्ति का स्मरण हो आता है, जिसमें लिखा है उन्होंने कि रात्रि ठिठुरन भरी है और बादल सफ़ेद हैं। जुलाहे जो गंभीरता में बुन रहे हैं वे केवल अंत्येष्टि के लिए कफन ही बुन सकते हैं, जिसका साधारणतया रंग सफ़ेद ही होता है। यह पद्यांश भगवान शिव से संबंधित है, जो कि विनाश और मृत्यु के देवता हैं। इस प्रकार यह कविता मानव के दुखांत या दुख भरे अंत से समाप्त होती है। इस पद्यांश की जो राइम स्कीम है इस स्टेंजा की वो है EEFF। यह स्टेंजा और पद्यांश जीवन के अंत अर्थात मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता है, और इसमें जो सिमिलीज यूज की हैं जैसे पंख की भांति सफ़ेद, बादल के समान सफ़ेद, ये बहुत अच्छे रूप में इनको यूज किया है पोइटेस ने। गाइस, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम और यह हमारी भारतीय संस्कृति से संबंधित है। भारत की जो मिथोलॉजीज है उनकी जो थीम्स रही हैं अब तक उनको यूज किया जाता रहा है अपनी इंडियन राइटिंग्स में, उसको रिप्रेजेंट भी करती हैं। सो आप सभी इनको इस कविता को पढ़िए और इसका आनंद लें। थैंक यू।